हर बार पहाड़ों में खुद को खो देते हैं हम, खुद ही से वाकिफ होने के लिए। खुद को खो के ही खुद को पाने की सिलसिला कभी रुकता नहीं। जितना मुश्किल सफर उतनी ही सुहानी उसकी यादें, उसकी सीख। पर लोग हमेशा अक्सर ये पूछते हैं, हर बार हमारी मंजिल कठिन चुनौतियों भरा ही क्यों होता है? ट्रेकिंग हर बार इतनी टफ है? तो फिर जो बस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? इन सारे सवालों के जवाब लिए जो सीरियसली ट्रेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसी बेहतरीन रूट जो बिगिनर्स ट्रेकर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बिग समिट, बेहतरीन व्यू, बेहद ही खूबसूरत कैंप साइट्स, एडवेंचरस ट्रेल्स एंड ऑफ कोर्स फ्रेश ब्यूटीफुल स्नो। सब कुछ मिला के शुरुआत के लिए इससे बेहतरीन और वो भी बजट फ्रेंडली कोई और ट्रेक रूट हो ही नहीं सकता। रूट गाइडेंस हो या ट्रेक की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स लिए हम एक बार फिर लौट आए हैं आपके पास एक खूबसूरत पहाड़ों की ठिकाना लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, वरना कुछ बहुत ही खास मिस कर देंगे आप लोग। हावड़ा से उत्तराखंड की लंबी ट्रेन जर्नी अलग ही एडवेंचरस है। After almost 30 long hours memorable train journey, we finally reached Dehradun, where tasty food and healthy sleep were waiting for us. क्योंकि उसके बाद शायद दोनों की उम्मीद रखना सही नहीं होगा। अगली सुबह हमारी कार तैयार थी। हमें लगभग 200 किलोमीटर की लंबी सफर देहरादून से सांकरी विलेज ले जाने के लिए। इन बिटवीन वी स्टॉप्ड एट मुसौरी फॉर अ टेस्टी ब्रेकफास्ट। Leaving Mussoorie behind, we headed towards our destination with beautiful Yamuna flowing along the way. The concluding part of the journey between Dehradun to Sankri through Govind Ballabh Pant Wildlife Sanctuary left us spellbound by its mystique forest. सांकरी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द केदारकांता ट्रैक। यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे दुकान मिलेगा जहाँ ट्रैक के लिए सारे नेसेसरी इक्विपमेंट आप खरीद सकते हो या फिर रेंट पे भी ले सकते हो।
As we reached Sankri, we were surprised and amazed to see our fellow trekker, Bulu the German Shepherd. After a beautiful long drive, the hospitality we received at Sankri was indeed praiseworthy. We were welcomed at Sankri with tea and snacks. And then we moved to the comfort of our excellent rooms. After freshening up a bit, it was time for briefing and introducing each other to the entire team for tomorrow's trek. It's very important to know your trekmates and your guides very well, because for the next few days, you are not just going to walk and live with them, but they will be like your family and your best support system at such an altitude. ब्रीफिंग के बाद ही बेहतरीन डिनर लग गया। टेस्टी चिकन, गरम दाल, रोटी और डेजर्ट में डिलीशियस कस्टर्ड। And the next morning at around 8:30, finally our trek began. जंगल से घिरा हुआ केदारकांत ट्रैक की पहले दिन की ट्रेल धीरे धीरे चढ़ाई गेन करने लगा। पर ट्रेल की बेशुमार खूबसूरती थका देने वाली चढ़ाई को भी पलकों में भुला दिया। काफी पॉपुलर ट्रैक होने की वजह से केदारकांत की ट्रेल पे लोड फेरी करता हुआ म्यूल्स की अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसीलिए ट्रेक करते वक्त ट्रेल्स में थोड़ी सावधानी बरतने की भी जरूरत है। थकान मिटाने के लिए पूरा ट्रेल में कई जगह पे टी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आपको गर्म पानी यहाँ तक कि मिनरल्स वाटर भी मिल जाता है। केदारकांत इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्नो ट्रैक इन इंडिया एंड पीपल एक्चुअली प्रमोट दिस ट्रैक फॉर द स्नो। बर्फ की अलग ही खूबसूरती है, वो सही है, पर बर्फ के अलावा भी ट्रेल बहुत खूबसूरत और एडवेंचरस है। जो लोग पहली दफ़ा ट्रैक करने इस रूट पे आते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए इट्स परफेक्ट एज इट प्रोवाइड्स यू विथ लॉट्स ऑफ लेसन्स दैट यू विल नीड फॉर फर्दर ट्रैकिंग। Lush green deep forest, beautiful campsites, soft breeze, and a soft melody of someone playing flute, far away, welcoming and pulling you to the snowy embrace of the mountains. Seriously, what else can you ask for? As we reached another beautiful campsite and tea point, we realized where the sound of the flute was coming from. For the beginners, the first day trail of Kedarkantha might be very tiresome or hectic. But in the mountains, it's better not to count the kilometers or the ticking of the clock. Rather, cherish every moment that you get.
because once gone, this moment will never come back again. As we were walking towards our first campsite, Juda ka Talab, the weather turned grumpy. It looked like it would snow, but didn't. After walking for almost 7 hours, we reached our first campsite, Juda ka Talab. Usually at this time, the whole trail remains crowded. So to avoid the crowd a bit, we set our campsite a little bit away from the famous Talab. After reaching the campsite, to ease ourselves after the long hike, we enjoyed a fun and relaxing session of light freehand exercise. Then it was time for lunch. Anda bhat with mandatory rajma dal. As the sun touched the horizon and the sky wore its dark shawl, the most energetic and musical campfire began at the heart of the mountains. After a prolonged hike and the sheer cold of January at Kedarkantha, the fun games, the music, and the warmth of the gleaming fire were a few exceptional memories that we have. Then after a prolonged memorable day, we had a surprisingly tasty dinner at 8 with delicious gulab jamun at such an altitude. I mean, wow, can you imagine? With happy tummy, we retired to the cozy comfort of our sleeping bags and called it a night. Next morning at around 9, we started our trek from Juda ka Talab to Kedarkantha base camp. शुरुआत में ही we had to cross a very tricky ice patch. So we had to be very careful from the very beginning. हमें ज़्यादा तो नहीं चलना था उस दिन, but the ascent was really stiff.
आफ्टर वॉकिंग अ माइल फाइनली वो घर ही आ गया जिसके लिए ये ट्रैक मशहूर है। इट वॉज फाइनली टाइम फॉर स्नो। इस साल उत्तराखंड में इतना बर्फ नहीं गिरा, so we thought that we won't get snow. But as we were approaching the base camp, we were proven wrong. बेस कैंप से हमें हमारा मंजिल केदारकांत पीक दिख गया और लगा कि चलो आ ही गए, मंजिल अब दूर नहीं। But the real story was waiting for us that night. After reaching base camp, it was time for healthy lunch. The campsite at Kedarkantha Base Camp is exceptionally beautiful. And if you move a little bit farther ahead, you will get to see a clear and outstanding view of snow-clad ranges standing tall at the heart of the blue sky. And this sight is quite rare in this particular trek, as the large part of the trail is covered with huge trees that actually obscures this beautiful view. The same night, after having dinner at around 7:30 and retiring to our tent for a power nap, we realized that it was snowing and it eventually stopped after a while. That was the final night of the Kedarkantha trek, the night of the final summit push. रात के 3 बजे थे और हम निकल पड़े summit की ओर. This was the most challenging part of the entire trek, क्योंकि अगर आपको sunrise देखना है तो you have to start at midnight and you will have only the light of your torch to show you the way to the steep summit. इतना अंधेरे में सिर्फ रास्ते तय करना नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ आगे मूव करना काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि साल के इस वक्त इतना में रहता है कि ट्रेल में ट्रैफिक जैम और अंधेरे में टीम से बिछड़ जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इन हालातों में आपकी गाइड आपकी सबसे अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी है, because no one knows the mountain better than the Sherpas. Before you set out, just keep it in your mind that this is the day when your potential will be tasted. Because everyone set out for the summit, but a lot of them give up way too early at the face of the steep summit. Obviously, it's going to be hard to reach an altitude of 12,500 feet, but it's gonna worth it. Patience and determination is the key. As we have already mentioned earlier that it was a snowy night, we got to see the regal red at the horizon, but the sky remained cloudy all throughout, waiting for a second round of heavy snowfall. ठंड जितनी ज़्यादा थी उतनी तेज थी हवाओं की गति। सनराइज के पहले हमेशा ठंड सबसे ज़्यादा होता है। It was -10 at the top of Kedarkantha. After enjoying a chilly 1.5 hour stay at the summit of Kedarkantha peak, it was finally time to say goodbye to the top. समिट तो हो चुका था, पर उसी दिन हमें समिट से डायरेक्ट सांक्री विलेज तक की दूरी तय करनी थी, जहां पहुंचते पहुंचते शायद शाम ढल जाती। जैसे कि हम सांक्री की ओर बढ़ते गए, केदारकांत और भी गहरा बर्फ के चादर ओढ़ने लगा, जिसकी आहट तो पहले से ही मिल चुका था। कभी खूबसूरत ताज़ी बर्फ में नाचते हुए तो कभी स्लाइड के मज़े लेते हुए हमने लौटते वक्त भी काफ़ी प्यारे यादें समेट लिया। सांक्री लौटे तो बर्फ़ की जादुई सफ़ेद तस्वीर दिल में हमेशा के लिए जगह बना लिया। बिफोर वी से गुड बाय, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ कॉशन। बर्फ़ जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ये रूट आसान हो जाता है। बर्फ़ ज़्यादा हो तो आप समिट से सनराइज़ या सनसेट दोनों में से किसी का भी लुत्फ़ उठा सकते हो, पर अगर बर्फ़ कम हो
तो रात के अंधेरे में उतरने से ज्यादा चढ़ना ही सही रहेगा।